Hello and welcome to this very special presentation on NDTV. A film that's been winning a lot of hearts in the past couple of days and one that has triggered the right conversations. 12th Fail, well, it's based on a real life story and it's being talked about as a clutter-breaking film, of course, something that has inspired thousands and that is very close to the hearts of those preparing for, well, one of the most coveted and sought after UPSC examinations. I'm being joined by the cast of the film and also the makers of the film. Vidhu Vinod Chopra is with us, also Vikrant Massey, and the real life hero of this very moving story, Manoj Kumar Sharma, also with us. Thank you very much, gentlemen, for joining us on NDTV. Manoj Saab, going across to you first. This in many ways could be seen as your directorial comeback. Why this script? You know, this is a rather unconventional story, of course, based on a real life story. But you, I'm sure, get tons of scripts every day. What made you put your money behind this story and what made you bank on this story? Have you seen the film, Vedant? Of course, I have, sir, and I was extremely moved. Then the answer is in the movie. Yeah. The answer is in the movie. If you've seen the film, then you know why I chose it. Because It's a story that's very close to my heart, not only my heart, to the hearts of millions of young people in this country who are striving, and millions of not so young people who are striving. So this is a story that had to be told. It is very important for us to tell people that, you know, you may fall down in life, which you do, all of us, but then you get up and you restart. That's why I'm wearing it on my chest literally these days to say that don't give up, just restart. It's like a game. You know, you play video games, all of you, and most of you will say you fall dead in a video game. In 1 second, you press the restart button and start again. Yes. Why can't you do it in life? It's the same. Life is a game. Just please, for God's sake, don't give up like that. Don't give up on life. Don't give up on yourself. You fall down, you just get up and, like a video game, press the restart and move on. That's Absolutely. why I made this film. Absolutely. And as you said, it didn't just resonate with people who are going through that currently, you know, that pursuit of restarting your academic journey, but a lot of people who look back at their journey as well. But, Vinod Saab, you know, it in a sense felt like a labor of love. Was there some sort of personal story as well behind this that, you know, made you make this film? Yeah, you see, I come from Kashmir. I come from a small little place called Wazirbagh there. And when I told my father I want to make movies in Bombay, he laughed at me. He said, "You'll die of hunger." Yeah. And he slapped me and said, "Are you crazy? You can't." And you know, there was no way I could dream of coming here and being where I am. But I chose the path. You know, at that time we didn't have money, so there was Royal Academy of Dramatic Arts, RADA. I got 60 rupees, which is £1. I got the prospectus of RADA, and I used to sleep with that prospectus, thinking, "Okay, one day I will go there." Absolutely. So I was a dreamer, and it's as much my life. When I told my father in '79 I was nominated for an Oscar, and I was so happy. I called my father, "Dad, I got nominated." The first thing he asked me, "Really great? How much money?" I said, "There is no money." I said, "Why are you so happy?" In fact, a question that is asked of us as journalists also. In fact, when I told my parents I want to be a journalist, I got a similar reaction as well. But of course, you know, you dream and you don't give up and you move forward. But Vikrant, you know, the portrayal of Manoj's character, and I'll come to Manoj Saab as well. But, you know, there's a lot of vulnerability. And that is something that comes across really well. How did you tap into that emotion of somebody who is perhaps extremely naive, doesn't have that much worldly knowledge, comes into this this new world, which is he's completely unaware, but also there is that understated, that quiet resilience and perseverance that is also there. So that mix of aggressive perseverance, but at the same time understated vulnerability. How did you bring that emotion out? How did you tap into the character? I think it was imperative for us to also recognize that this boy who comes from Chambal is very unadulterated. He has not been corrupted by the modern world, so to say. And the silent resilience
I mean, all of us have that. I personally possess that silent resilience within, and most of us, especially people like Manoj sir, who've had such a challenging life, who've made certain choices in life. Because you've seen the film, I'm sure you know what I'm talking about. He says कि मैं चीटिंग छोड़ दूंगा, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना. So people like Manoj sir or the character that we developed, these people are unadulterated. इनमें कोई मिलावट नहीं है. ये बहुत ही ईमानदारी से जीते हैं. और वो कहता भी है कि अगर मैं आईपीएस नहीं बनूंगा तो मैं गांव जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा कि चीटिंग छोड़ देंगे. और अगर वो चीज ये उस छोटी उम्र में समझ जाएंगे तो जीवन में आगे चल के कभी चीटिंग नहीं करेंगे. So that vulnerability, that purity was very important, because of course a lot of it is him. A lot of it was already laid bare for me. Sir worked on the script for 3.5 years before we started shooting. The idea for me was to just go out there and represent the millions and millions of Manoj जिनकी ये कहानी है. And majority of the students, if you see, especially अगर आप low income group की बात करें, मैं पूरे आश्वासन से कह सकता हूं कि 95% of those kids who aspire to be civil servants, they come from very challenged sections of society, but they want to go through the grind to change the world or make the world a better place, and that is their resilience. So I was representing Manoj sir, of course, but through his character representing all the Manojs or all those students who aspire to dream and make the world a better place. Absolutely, and that ambition that you talk about is so powerful, just to go out there and change the world, and that was very evident in the film as well, and extremely nuanced. In whatever little capacity you can, in whatever little capacity. Yes. He says, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Yes. Yes. So that's the thing. Your contribution, even at the smallest particular level, is more than enough, and that is what is going to take us far, I think, collectively. Absolutely, and Manoj sir, let me get you in on this as well. आप आज अपनी स्टोरी को कैसे देखते हैं? It's as Vikrant was also talking about कि एक यूनिवर्सल स्टोरी है. लाखों बच्चे जो ये एग्ज़ाम लेते हैं और किसी भी फील्ड में वो आके एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर as Vikrant was also pointing out, it's a culture shock as well for them to adjust, चाहे वो कोटा की बात हो या फिर यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर और तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से आते हैं और यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं. आपको लगा था कि आपकी स्टोरी इतनी यूनिवर्सल हो जाएगी कि वो तमाम लाखों बच्चों को आज इंस्पायर कर रही है, आपकी स्टोरी, ऑफ कोर्स थ्रू द बुक एंड नाउ थ्रू द मूवी एज वेल? आप एकदम ठीक कह रहे हैं. ये कहानी और ये जो स्टोरी है वो इतनी यूनिवर्सल है, ये हमको पता था, क्योंकि मेरा को ऐसा मानना है कि हर जगह पे एक जैसी कहानी चल रही है पूरे देश में. ये देश में दरअसल दो भारत हैं, जिसमें एक गांव का है, छोटे शहरों का है, जहां पर हर आदमी एक एक पैसे के लिए मोहताज है, एक एक चीज का काम करना चाहता है, छोटे छोटे रोजगार कर रहा है, खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है. उनके बच्चे जब बाहर आ रहे हैं तो चाहे वो यूपीएससी के लिए आए या किसी पीईटी के लिए आए, पीएमटी के लिए आए, इंजीनियरिंग के लिए आए या किसी भी चीज के लिए आए, उनको वैसा ही संघर्ष करना ही पड़ता है. और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस मूवी में विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो असली चीज रखी है वो ये रखी है कि भाई आप कहीं से भी आओ, लेकिन आपको लड़ना है, आपको संघर्ष करना है, क्योंकि लड़ना ही नियति है और जो लड़ेगा वो जीतेगा. और इसीलिए अनुराग पाठक ने जो किताब लिखी थी उसका पूरा टाइटल यही था, 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं. और इसीलिए इस किताब में भी, इस मूवी में भी वही सेम चीज लेके चले हैं हम लोग. हमको खुद सेल्फ में बिलीव होना जरूरी है. मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, मुझे अचानक से याद आ रही है कि जब मैं गाँव से शहर में पढ़ने के लिए आता था तो अपने गाँव से ना मैं गेहूं लेके आता था, क्योंकि यहाँ पर शहर में गेहूं बहुत महंगे मिलते थे, तो हम गाँव से लेके आते थे. तो होता रहता है कि बस स्टैंड से लेकर के जहां हम रह रहे हैं वहां तक जाने के लिए हमको कंधे पे गेहूं का बोरा जो होता है उसको लेके जाना पड़ता था. तो उस समय बार बार मन में ये आता था कि यार ना थोड़ी शर्ट थोड़ी सी नीचे की तरफ थोड़ी फटी हुई है, तो सब देख रहे होंगे. मुझे लगता था कि मेरे को बस स्टैंड से लेकर के और दुकान तक, अपने घर तक जाने में कम से कम पूरा का पूरा ग्वालियर मुझे दिख रहा हो. और मेरे मन में ये भाव था कि यार कैसे छुपूं, कोई मिल ना जाए. फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि यार किसी को क्या पड़ी हुई है मुझसे, मेरे को क्या मतलब है किसी से.
मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी शर्ट अगर फटी है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, मैं अपने जीवन में आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो ये आत्मविश्वास की कहानी है, और ये आत्मविश्वास वो जो कैरेक्टर है विक्रांत ने जिसमें बहुत न्याय किया है, वो धीरे 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 कॉन्फिडेंस में आ रहा है। पहले दिन से कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता। बिल्कुल। बोर्न इंटेलिजेंट कोई नहीं है दुनिया में। बोर्न जब आदमी ऐसा कोई नहीं है जो पैदा होते से ही इतना इंटेलिजेंट है कुछ भी कर देगा, सब धीरे धीरे सीखते हैं दुनिया में। अभी सिलेक्शन के बाद की जो दूसरी दुनिया है आईपीएस बनने की, 2 साल की ट्रेनिंग और उसके बाद का जो पूरा आपकी नौकरी होती है, पोस्टिंग होती है, उसमें भी आप सीखते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि संघर्ष करना है, जूझना है, और इसके लिए घबराना नहीं है। और यही वो मैसेज है जो विधु विनोद चोपड़ा ने इस किताब के माध्यम, इस मूवी के माध्यम से पूरे देश को दिया है, और पूरा देश इस बात को समझ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मनोज साहब, एक बहुत जो हार्टनिंग चीज़ मुझे इस फिल्म के बारे में लगी, वाइल इट इज़ योर स्टोरी, आपकी कहानी है, लेकिन जो उस संघर्ष में, आपके संघर्ष में जो लोग आपको मिले, उनका भी जो पोर्ट्रेयल है वो बहुत ही मूविंग है कहीं ना कहीं। वेदर इट इज़ योर लाइफ पार्टनर, वेदर द पीपल यू मीट, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, या फिर जिस पुलिस ऑफिसर को आप आइडलाइज करते हैं, आज उन लोगों को आप कैसे याद करना चाहेंगे जो इस संघर्ष में आपको मिले? उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आपकी कहानी में। आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि अपने पूरी दुनिया में कम से कम 80% लोग अच्छे हैं, 80 से 85%। लोगों की अच्छाई हम तक पहुंच नहीं पा रही। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने पति को, बच्चों को सब आगे ले जा रहे हैं। तो मेरे फादर मदर जो चाहते थे कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, वैसे सबके बच्चे, सबके फादर मदर चाहते हैं। मैं जैसे चाहता था कि मैं आखिरी में कॉल करके बोलूं कि माँ मेरा आईपीएस में हो गया है, मैं आईपीएस बन गया हूँ, वैसा ही हर एक बच्चा चाहता है कि वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, हर चाहता है कि मैं सफल होकर अपनी माँ को फोन करूं और माँ रोए और बताए कि बेटा तुम पूरा सपना पूरा कर दिया। ऐसे मेरी वाइफ, उसने वो साथ दिया जब कोई किसी भी तरह का कोई सर्टेनिटी नहीं थी। जब आज श्रद्धा नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप घर घर में देखोगे ना, हर एक वाइफ अपने पति का साथ दे रही है। आप देखिए ना, पैसे बचा के रख रही है उसके किसी टफ टाइम के लिए। हर एक जगह पे आप देखिए, दोस्त, मेरा अनुराग पाठक का दोस्त, कई ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अच्छा यूनिवर्स है, जो अच्छे लोग हैं, उनकी कहानी बाहर आना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी 80-85% लोग बहुत अच्छे हैं, और ये लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपने लिए नहीं कर रहे। अब देखिए ना, कई आप घरों में जाइए, आपके घर थोड़ा, जैसे मेरे घर में जब अगर कोई सामान आता था खाने के लिए और हम सब लोग भाई बहन खाना खाते थे, तो मेरे फादर मना करते थे, नहीं मैं नहीं खाता। अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों मना करते थे, क्योंकि उनको पता था कि कम पड़ जाएगा, बच्चों के लिए, पूरे लोगों के लिए हो जाना चाहिए। तो हर आदमी त्याग कर रहा है। त्याग की अगर आप पूरे के पूरे दुनिया को डिफाइन करेंगे ना, तो दुनिया में सिर्फ प्रेम और त्याग ही वो चीज है जो चली आ रही है और चलती रहेगी हमेशा। तो ये प्यार और त्याग की कहानी है जो घर घर में हो रही है। और मुझे लगता है कि विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो किया है, विक्रांत ने जो किया है, मेधा ने जो किया है, वो एक ऐसी कहानी को जो हर घर की कहानी है उसको पर्दे पे ला दिया है। बहुत बड़ा काम किया। और जैसे कि आपने कहा कि जी बताएं। मनोज यार, मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो क्या होता था, हमारे घर में कभी गेस्ट आते थे तो पहले ही वो बोल देती थी कि आज मेरा व्रत है। क्यों है वो, आज मैंने ये व्रत रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता होता था खाना कम है। और वो हमेशा हमको पहले ट्रेन करती थी, खासकर जब पनीर बनती थी, कि बेटा तुम हाफ पीस से ज्यादा मत लेना। और अगर बच जाता था खाना, फिर वो खाती थी और हमको खिला। तो मुझे कहाँ ले गया यार। थैंक्स सो मच विनोद साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अपनी रसोई याद आ गई, बिल्कुल, जहाँ माँ हमको खिलाती थी। और जैसे कि जी बताएं। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, जैसे कि मनोज सर कह रहे थे कि ये एक प्यार की कहानी है, एंड मेनी हैव पॉइंटेड आउट दैट दिस इज रियली एन अनकन्वेंशनल विधु विनोद चोपड़ा फिल्म, बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन बिकॉज व्हाट इज सेंट्रल टू दिस फिल्म इज ऑल्सो द लव स्टोरी. And that is something that really comes across. So, you know, love has been really one of the key driving factors in your films, hasn't it? I really feel love of your brother, love of your family, love of your brothers, your friends, even your loved one, the woman you love. See, that's what I've said in the film. I am here today because my brother, and you've seen his picture right in the beginning of the photograph, he's no more. But he supported me to go to the film school. वो नहीं होता तो मैं तो फिल्म इंस्टीट्यूट ही नहीं जा सकता. So it was, and the character of Kamlesh in the film, the brother of Manoj in the film, is based on my brother also. Because वो उसको कहता है कि तू चिंता मत कर, बन जाए ऐसा ऑफिसर, पैसे की चिंता मत करना.
This is exactly what my brother told. So the point is, I genuinely believe that if you're a good person, you get more people around you, like in the movie, who help you reach your stage. See, I would have never been here, but for everybody, including my brother. अगर मेरा भाई वीर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पहुंच ये इंटरव्यू ही नहीं होता. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं. Absolutely, and that's really moving what you're saying. Vikrant, I also want to go across to you now. While, of course, it's Manoj sir's story, I feel it's also, your moment in the sun. Given how, how well the film is doing and the kind of reviews that you're getting, really rave reviews across the board, and the film, of course, as I said, performing commercially well as well. What does it really take for an actor like you? What do you have to put in? I'm sure you have to give it your all, emotionally, physically, mentally. What does it take? Share that experience for us. I think you partly answered my question. I think emotionally, physically, mentally, you need to give it your all day in, day out. And one of the reasons why this story is so special to me is because I saw bits of my own life in this story. I started off with television at the age of 16, professionally acting. Prior to that, I used to work in a coffee shop for a mere 800 rupees a month. So I have done everything within my capacity, but at the same time, not losing sight of my integrity. The idea was to, go out there. Yes, life is tough, as everyone is saying. That's the reason we have Restart. There will be challenges. But to not lose sight of your integrity, to do things your way. And I kind of held on to that. And here I am today, so proud of myself that I did not slip. There were moments. And I kind of stuck to my own guns and my own value system. And I met like-minded people. I met people who have similar value systems. It began with Vinod sir. We see the world in so many, in absolutely similar ways. Our value systems is the same. And so is Manoj sir and a lot of other people in our lives. So you meet like-minded people if you have the gumption to hold on. And that is all that I would say, I'm still figuring it out. I still don't know everything in life. I'm still figuring it out. But one thing I definitely know is that whatever I do, I need to keep my integrity very close to my chest and move forward. Sincerity is key. Honesty is key. And that is what this story is about. आप पानी की तरह आप अपना रास्ता बिल्कुल आपको मिलेगा. The idea is to just hold on. अब जब सर की भी अगर हम बात करें, दूसरे अटेम्प्ट के बाद, तीसरे अटेम्प्ट के बाद, वो रुके नहीं. He went on and he went on his way. जब पूरी क्लास को चीटिंग करने का मौका मिला था, इन्होंने तब भी चीटिंग नहीं की. तो वो हिम्मत लगती है, वो एक ताकत रखती है आगे बढ़ने की. And I think I possess that skill set, and I'm glad that I got this opportunity because of Vidhu Vinod Chopra sir. उन्होंने मेरी एक फिल्म देखी थी जो उनको पसंद आई थी. He invited me, he narrated the script to me, he gave me the book, he gave me the script, and he had faith in me. Right. अगर कोई आप पे इतना विश्वास करता है तो you really have to sort of give it your all. Absolutely, and you have come a long, long way is, what I can say with some amount of certainty. But one thing that you said really struck a chord, that you have to, you have to keep your integrity intact. And Manoj sir, कहीं ना कहीं ये आपकी भी कहानी है कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो which you can't compromise on, whether it's in your personal life, whether it's in your interpersonal relationships, या फिर of course professionally. कुछ सिद्धांत, वो मूवी में बहुत evidently नजर भी आता है कि कुछ सिद्धांत आपके ऐसे हैं जो लाइफ टाइम आपके इंटैक्ट रहे अब तक, और चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो. बेसिकली आप देखेंगे जानवरों में और इंसानों में जो बेसिक अंतर है ना, वो यही है. हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हमारी कुछ मान्यताएं, उन मान्यताओं को लेके हम जी रहे हैं. और आप देखते हैं जब कोई सिपाही, कोई बंदा अपनी जंग में जान देने को तैयार होता है, तो वो रोटी के लिए नहीं है, वो सिद्धांत के लिए है. ऐसे ही अगर हम पहले बोलते हैं कि पहले शुरू में बोलते थे, हमको बचपन में ऐसा पढ़ाते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अभी मैं ये मानता हूं कि ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, कोई और पॉलिसी है ही नहीं. इसीलिए हमको अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाना है कि आपको ऑनेस्ट कैसे बनना है. उनको कोई चालाक बनाने की जरूरत नहीं है. कोई बहुत ज्यादा हम लोग 95%, 98% के पीछे भागने की जरूरत नहीं है.
हमको सिर्फ उनको एक ही चीज सिखानी है कि तुम खड़े रहो और जहां खड़े हो जमीन पकड़ के खड़े रहो, और जमीन जो है उस जमीन पे अपने पैर इतनी मजबूती से रखो कि आपकी आपकी बारी आएगी, आपको दुनिया सुनेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करें। समझौता आपको कमजोर करता है। कोई भी व्यक्ति जो समझौता नहीं करता वो आगे जाना ही जाना है। मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ता था, और लाइब्रेरी में जब मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ बोलना सीखूं, कुछ करना सीखूं, तो मेरे दिमाग में हर वक्त एक ही बात चलती थी कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप भले ही आज आज छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप दुनिया आपका इंतजार कर रही है। दुनिया बड़ा काम करने के लिए आपका सहयोग करेगी, क्योंकि आप अपने मन में एक बात बिल्कुल रखिए कि दुनिया बहुत अच्छी है। आपको हेल्प करने के लिए इतने लोग आते हैं ना, आपने सोचा भी नहीं होगा इतने लोग आते। मुझे हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो अपने घर ले जाकर के ले गए कि भाई तुम मेरे साथ चल। कितने लोगों ने मेरी फीस भरी है। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो मेरा खुद का नहीं है। बेसिकली ये यज्ञ था जिसमें कई लोगों की आहुतियां गई हैं। तो इन आहुतियों को देने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। अच्छाई भरी पड़ी है, अच्छाई पे विश्वास रखना चाहिए। और इसीलिए मैं, श्रद्धा, अनुराग, तीनों हम लोग विधु विनोद चोपड़ा जी के को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने सच्चाई को या अच्छाई को समझा, और उनको पता है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, और उन अच्छे लोगों के लिए मूवी बनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, and it's really rare to meet somebody like you in especially in the kind of cynical world that we live in. And as you said, this movie is in a sense also an ode to good Samaritans. And this brings me to you, Vinod Saab, a little sort of moving away from the story. Do you think that your movie also in a sense is reinstated people's faith that good stories will also find their way into theatres? Because many would say that this is a quintessential OTT film, a quintessential streaming film, but it's doing so well theatrically as well. So do you think, it comes at an interesting time? See, I haven't sold this film to any OTT, no Amazon, nothing. Yeah. This film is my film. I have released it myself through Z, of course. We have not recovered any monies. The only monies we recovered was through music sale to Saregama. Why did I do that? Because I want the community to go together to see this film in a theatre. I want parents, children, school kids, college kids to sit together and as a community to say to themselves, like Atal Bihari Vajpayee said in the poem, which I've used, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो मैं चाहता था कि ये सब गीत एज ए कम्युनिटी का, नहीं तो मुझे सबने कहा कि यार बेच दो, ओटीटी को दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इतने पैसे में बिक जाएगी, इतने पैसे। But I didn't do it because I believe that this film can change lives and I'm proved right. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि how many people are writing to me from all over saying that the film has changed their life. मतलब there was a kid जो बम्बई छोड़ के 8 साल पहले चला गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, कल उसका मैसेज आया कि मैं वापस बम्बई आ रहा हूँ सर, मैं रीस्टार्ट करूँ। तो इतने लोगों को ले जाना, थिएटर तक पहुंचाना, और ये जो आप कह रहे हैं, मेरा आज नहीं, मेरा मुन्ना भाई एमबीबीएस से लेके, मतलब परिंदा से लेके ये बिलीफ रहा है कि ये जो हम देखते हैं, ये जादूगरी की फिल्में, पॉपकॉर्न खाते हैं, वो देखते हैं, छुट्टी हो जाती है, फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। बहुत कम फिल्में बनती हैं जो आप घर साथ ले जाते हैं। अब ये फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो गया, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, नॉर्मली हफ्ते के बाद किसी फिल्म की बात ही नहीं। बिल्कुल। और आजकल जो सबसे बुरी हालत है, जो मैं समझता हूँ टेरेबल है, कोई फिल्म की बात ही नहीं करता। आई फाइंड इट ट्रैजिक। कलेक्शन क्या है? अरे इतने करोड़ कमाना, अरे तो उससे फिल्म का क्या ताल्लुक है यार? तुम देखो कि इस फिल्म को देख के तुम पहले से बेटर ह्यूमन बीइंग बने, इस फिल्म को देख के तुमने कुछ सीखा, इस फिल्म को देख के तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हुई, वो देखो ना। प्रोड्यूसर कितने पैसे घर ले गया, तुमको क्या लेना देना? And I think, Vinod Saab, your film has achieved all of those things that you were talking about. It has struck a chord, it has moved people, inspired many. Thanks very much, gentlemen, for joining us on NDTV. Of course, thank you for making this film that stands as a shining beacon of hope, as I said, in the cynical world we live in. Thank you so much, and thank you so much, ending with the fact that it is a beacon of hope in the cynical world. Thank you. Absolutely. Thanks for joining us, and thanks for watching. Thank you.